आइटम नंबर 3 श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज मैं सभा के पटल में रखूंगा। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, on behalf of my colleague Shri Shantun Thakur, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name at serial number 4 of today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5 श्री संजय सेठ जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of, in English and Hindi, each of the papers mentioned against my name at serial number 5 is today's revised list of business. आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Chairman sir, in pursuance of section 76, by the Honorable Speaker Lok Sabha, I rise to inform the House the status of implementation of Directive in the Honorable Standing Committee on Health and Family Welfare on Medical Devices, Regulation and Control pertaining to the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 2nd December 2024 will consist of consideration of any item of the government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the following bills. 1. The Banking Laws Amendment Bill 2024 and 2nd, the Railways Amendment Bill 2024. Next item is the consideration and passing of the following bills. Number 1, the Disaster Management Amendment Bill 2024, the Carriage of Goods by Sea Bill 2024, and the bills of Lading Bill 2024. Number 3, discussion and voting on the first batch of supplementary demands for grant for the year 2024-25 and introduction, consideration, passing of the related appropriation bill after presentation. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Sir, Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of the Section 4G of All India Institute of Medical Sciences AIMS Act 1956, read with Section 6 of the AIMS Amendment Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to each of the 3 All India Institute of Medical Sciences at Raipur, Jodhpur and Vijaypur, subject to other provisions of the said Act. प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of the clause 1 of the subsection of the section 5 of the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bangalore, Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as the members of the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bangalore, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder. प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10 माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable sir, Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of clause C of subsection 2 of section 19 and section 17 of the Surrogacy Regulation Act 2021, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 women members from amongst themselves to serve as the members of the National Assisted Reproductive Technology
प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 श्री प्रतापराव जागब जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान RTRA अधिनियम 2020 की धारा 6 की उपधारा 1 के खंड ट के अनुसारण में इस सभा के सदस्य ऐसे रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दे उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों